So for me, today's agenda is wanted to deal with the same classification at first, and then I want to talk a little bit about economic systems, and then sort of like try and bring them together because they tend to come. I want to do a couple of 8 markers and even a 12 marker. I'm going to look at 12 marker also. In my previous class, we did talk about types of goods, public free good का answer, public merit good का answer, I think we've dealt with. So today, let's start with this one first. एक क्वेश्चन आया है नवंबर 23 के अंदर about the free and the public good. I think it's this one. I don't know if I've done this before or not, but I do want to take a look at it before we move on to something else. Right. So on your screen, there is a question. Yes, sir, there is. So it says, with the help of examples, explain the difference between free good and public good, and consider the view that public good can never, keyword is, can never be provided by the market economy. A few things that we should know. If you've done economic systems, you would have slight idea कि जब हम market economy की बात करते हैं, तो what we're saying is कि in a market economy, um, basically there is majority of ownership by individuals and firms. You're not going to get marks for this. I'm just saying what you should know before this. Individuals and firms. And there is minimal government's intervention. In fact, what we're saying over here is that there is no direct government intervention. What that means is that the government is not involved in producing goods and services. Okay? Whatever is happening by the demand and the supply, or individuals and firms are deciding what consumers want and how they can provide those goods. तो ये market economy होती है. And now they're saying कि public goods can never be provided by market economy. So we want to answer that a little later. But before that, there are very easy marks up for grab, which is the first part of the question, where you want to do examples of the free good and the public good. Whenever we're defining these goods, सबसे पहले free good की अगर हम बात करें, it is mandatory. And honestly, you can just get marks for just writing these couple of things. उसमें से एक भी कोई भी चीज marking scheme में आ सकती है. The first thing about free good we know is that there are no scarce factors of production used to produce these. If there are no scarce factors of production used, so that means there is no opportunity cost. And there is no price an individual has to pay for it. Okay? Because it's like one of those कि आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे आप देखते हैं कि भाई एक ऑरेंज ट्री लगा हुआ है या मैंगो ट्री लगा हुआ है, एंड यू कैन ब्रेक एंड यू कैन टेक अवे दोस थिंग्स बिकॉज किसी ने ना अपने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर, ना कोई रिसोर्स लगाया है ऑफ एनी इंडिविजुअल. It's just wild, maybe, and so people can benefit from it. तो हम इसको फ्री गुड कहते हैं, या फिर इवन लाइक एयर फॉर दैट, उसको भी आप फ्री गुड. इनफैक्ट एग्जाम्पल के अंदर जो ज्यादातर हमने एग्जाम्पल देखा है इसका, दैट इज फ्रेश एयर,
sunlight, and these are abundant, इनको प्रोड्यूस करने के लिए कोई scarce resource इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ है. So, सबसे पहले explain the difference between free goods. So I would like to suggest a few things over here. फिर उसके बाद, अब क्योंकि उन्होंने difference मांगा है, तो should I give just the definitions or should I make a comparison? So what I tend to do is, just to be safe, I would do both. What I would do is, सबसे पहले पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो फ्री गुड नहीं होते हैं, वो एक इकोनॉमिक गुड होते हैं. ओके, सो पब्लिक गुड्स आर इकोनॉमिक गुड्स. अब जब वो इकोनॉमिक गुड है तो उसका मतलब ये हो गया कि दे आर स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस देम. पहली बात. दूसरी बात, दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट to provide these goods. Because scarce factors of production used were, so I could have done something else with those factors of production. So there is an opportunity cost involved over here. इससे पहले I've always said कि देखें जी, जब भी they mention a public good, it is a must thing that public good को explain करने के लिए you must talk in terms of non-excludability. And you must talk in Non-rivalry and terms of non-detectability. non-rivalry. And you should definitely define these terms. Simple alfazzo mein, non-excludability means that anyone cannot be stopped from consuming the good once it's provided. And non-rivalry means that once, if anyone is using the product or a good or a service, it does not reduce or finish for the others. But while we're doing all of this, let's not forget that we have to give an example of them. And the example, the best ones to give could be something simple as street light. It could be the national defense. It could be the lighthouse. So that's that. 3 marks you get for just simply talking about this stuff. मेरे ख्याल में तो marking scheme के अंदर they did not factor in the economic good, but क्योंकि difference था तो I felt कि I should talk about this also. You never know. फिर उसके बाद, for the later part of the question, public good can never be provided in a market economy. So what I want to do is I want to talk about would it never? And if that is the case, why so? And can we come up with some ways through which it might be possible? Because remember, market economy के अंदर आप कहते हैं कि individuals and firms owns the resources. There is no direct intervention, but that doesn't mean there can be no indirect intervention through subsidies and things like that. So one of the important discussion that needs to be done at this point is कि public goods क्यों कभी नहीं provide होंगे? You want to talk about that. तो public goods क्योंकि non-excludable है और non-rivalry, तो one thing we know is that once the good is provided, There will anyone be like can less use profit incentive. anyone can use it without paying for it, or anyone can benefit from it without paying for it. Price cannot be charged. The free rider problem, you can't. Public good or uski, will it be provided or not, you can't end your essay without talking about the free rider problem. And free rider problem derives from the upper two things जो ऊपर हमने लिखी है, that एक दफा जब good produce हो गया, anyone can benefit from it.
and you cannot charge a price for it. जो भी लोग हैं उनको पता है ये बात, तो वो वेट करेंगे कि एक दफा गुड प्रोवाइड हो जाए फिर हम यूज कर लेंगे उसको। तो उसकी वजह से दीज गुड्स कैन नेवर बी प्रोड्यूस, एंड द आइडिया ऑफ देयर इज नो profits to be made because of the non-excludability element. So private sector will never provide it. In market economy, can never provide it. What are the scenarios under which you can or you may be able to provide a public good? तो हम एक नया आइडिया भी इंट्रोड्यूस करेंगे, and I think this can go in my evaluation. Under multiple circumstances, market economy may provide it. Number one, if government provides subsidies to private sector, then it is possible to provide these goods. पहली बात। दूसरी बात, if the goods is now excludable, इसको आप कहते हैं quasi public goods. If a good becomes a quasi public good, यानी कोई excludability का element आ जाए उसके अंदर, then now you are able to, like for example, you have roads all over Karachi, and एक तो टोल रोड्स होते हैं आपके पास, जैसे हाईवेज होते हैं। हाईवेज के ऊपर यूजुअली देयर इज अ सिंगल एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, तो आप वहां पे टोल्स लगा लेते हैं, एंड यू ओनली अलाउ पीपल टू यूज इफ दे आर पासिंग। ठीक है, but that would not apply to the local inner city roads, because there are so many entrances and so many exits, it is virtually impossible for you to charge every car that is using. Because if you put a toll in on one side, people will, uh, uh, you know, enter from another intersection. So it's impossible. But what if your city sort of becomes a safe city where you have cameras everywhere, right? So if you have cameras every single road के different areas के अंदर, and if your car passes through, like the way it is happening in Karachi right now, you have signals on all major parts of the cities. Once that is operational, now your number plate can be scanned by all those cameras, and they can keep track of when you're entering the city wala area or the local roads and you're using it, so the government can directly charge you or your car, which is connected to your NIC and all, and now they can actually charge you if they want, even for using the inner roads. तो ये अगर इस तरह की किसी किस्म की पॉसिबिलिटी आ जाए, FM 89 and all these channels. Now, if I have a radio in my car, I can listen to them. It's non-excludable, right? लेकिन all those like Spotify हो गया या these apps हो गया, उस वो इंटरनेट बेस्ड हो गए हैं। इंटरनेट बेस्ड यूजेस एप्स, एंड एप्स allow you to charge people for it, because अगर कोई एक नया FM रेडियो आता है, and that radio is sort of like an internet based, and you have to use an app or you have to use maybe a website for it. Now there is an excludability and you can charge people for it. So all we're saying is कि market economy might provide a public good, not a pure, but at least a quasi public, जिसके अंदर अब excludability का element आ गया है, तो then private or the market economy can actually provide these. Sometimes it is even possible that the private sector firm
may provide for what can we say कि वो अपनी सेल्फ मार्केटिंग के लिए या उनकी किसी सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव के लिए. I have seen in Karachi Sir, that a can lot you of. write? Oh, I'm sorry, sir. I'm cutting you off. Can I also write here their own public image, like Yeah, public sure. image, social image incentive? I have seen in marking scheme and I have seen in essays that they have suggested, because you have seen these things on the roads where companies do put street signs, but they also put their logo in the middle or somewhere on the side. So that could be for the public image, definitely. But they're not charging the users for those street signs. People can use those street signs to navigate, uh, but they just do it out of their self-image or self-promotion, or maybe like they might have good interest for the people in heart and they might be willing to provide. तो मैं उस बेसिस के ऊपर कह सकता हूं कि private sector may be able to provide it, but one thing is for sure that pure public goods तो नहीं provide करेगी. Pure public goods will never be provided. ये तो बात डन हो गई है. ठीक है. So this is how I would answer this question. It might be a repetition of something that I've already shown you in the last class. But what's coming next is I wanted to talk about this. Uski light ke andar. The next question for today I wanted to deal with is एक जून 23 का 21 variant. Uh, let me just put it on. June 23, the first variant. Oh, that's March. Yeah. Iska, I want to deal with question number 2, which is a 12 marker. So let's learn how to write a 12 marker today. I may have talked about, लेकिन आज इसको हम टॉपिक के थ्रू देख लेते हैं कि इस टाइप के टॉपिक के अंदर किस तरीके से we might deal with this question. So it says assess whether government should be, education should be classified as a public good rather than classified as a merit. इसको हम किस तरह से classify करें? The way a 12 marker is answered is on the basis of level. They 12 में से it's broken down into an 8 marker and a 4 marker. 8 basically AO1 and AO2, assessment objectives 1 and 2, which is knowledge and an understanding along with analysis. And the second one is the 4 marks is for AO3, which is an evaluation. Okay, this is how this will be written. This will be treated in levels, level 1, level 2, level 3. Level 0 means you completely misunderstood or you've just defined the terms, which is unnecessary. 8 में से 1 to 2, 3 to 5, and 6 to 8. ये इस तरह से आपका आंसर levels में breakdown होगा. And evaluation can have all sorts of levels also. Level 1, level 2. You can get up to 1 to 2 marks and 3 to 4 marks. That's how we break this down. ठीक है? Assess whether education should be classified as public good rather than classified as a merit. क्वेश्चन का एक डायरेक्शन है कि एजुकेशन को जो है हमें पब्लिक गुड्स में क्लासिफाई करना चाहिए
या इसको हम मेरिट? ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड without us talking about the definitions. You know, definitions, इसके अंदर हमें पब्लिक गुड की एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी, और मेरिट गुड्स की द होल अंडर प्रोविजनिंग वाला जो हमारा डिस्कशन होता है एज ऑलवेज। तो लेट मी गो अबाउट इट, किस तरीके से हम इसको फिर आंसर करेंगे। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट, देखें, सिर्फ और सिर्फ अगर तुमने मुझे प्योरली डेफिनेशन देना शुरू कर दी ना, तो देर इज नो मार्क फॉर इट। 12 मार्कर में डेफिनेशंस को सिर्फ लिख देने में कोई मार्क नहीं मिलेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड, बिल्कुल स्टार्टिंग से तुम्हारी पहली लाइन कैन बी कि जी एजुकेशन जो है वो पब्लिक गुड क्लासिफाई क्यों नहीं होगी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो एजुकेशन तो एक्सक्लूडेबल है, एजुकेशन तो राइवलरी है, तो उसको आप पब्लिक गुड में क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। तो द वे आई वुड स्टार्ट इज कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन जो है वो एक प्राइवेट गुड है। क्यों? वो एक प्राइवेट गुड है क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल है। क्या मतलब एक्सक्लूडेबल? कि एनी वन कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम यूजिंग दिस गुड बिकॉज देर इज अ वे कि अगर आपने एजुकेशन लेनी है तो फीस पे करेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। देर इज एन एक्सक्लूडेबिलिटी का एलिमेंट ओवर there. And it is also rivalry because classrooms have limited spaces, school has limited spaces. So if somebody has paid and enrolled themselves, there are fewer spaces available for other people. So therefore, it is, it reduces for other. So therefore, it is a private good, or, you know, but it is not a merit good. या मैं नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करूंगा, सॉरी मेरिट कह रहा हूं, इट इज नॉट अ पब्लिक गुड। नाउ दिस माइट साउंड लाइक रिडंडेंट कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, but I have to prove that it is not a public good because public goods are supposed to be non-excludable, which means what? That you cannot stop anyone from using the good, or it is non-rivalry. That means it does not reduce for the others. Therefore, हमें ये पता है कि एजुकेशन जो है वो एक्सक्लूडेबल है एंड राइवलरी है, तो therefore it cannot be public good. What I've just done now is, so far, is I've proven the fact कि एजुकेशन में एक्सक्लूडेबिलिटी है, राइवलरी है, इसलिए वो प्राइवेट है, और पब्लिक गुड्स असल में जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी होते हैं। तो क्योंकि एजुकेशन के अंदर यू कैन चार्ज पीपल फॉर इट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी। ठीक है। प्लस जब हमने पब्लिक गुड के बारे में ये बात लिख ही दी है, तो वी मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट कि देर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम ओवर हियर। उसके अंदर देर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। ओके। क्योंकि जब वो नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं तो उसमें एक फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है, दैट विच इज दैट यू कैन नॉट चार्ज पीपल फॉर इट, एंड दैट इसको बस आप एज अ फॉर्मेलिटी बेसिकली फिट इन कर रहे हैं अपनी इस एक्सप्लेनेशन के अंदर, एंड सो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक आंसर्स क्वाइट अ बिट ऑफ माय क्वेश्चन
लेकिन अभी भी व्हेन आई सी, मैंने इसके अंदर मेरिट वाली कोई बात नहीं की है. सो व्हाट आई शुड आल्सो डू इज, सिंस आई सेड कि ये एक प्राइवेट गुड है, और और इसको पब्लिक गुड की जगह व्हाट आई शुड डू इज, marking scheme I think probably takes it as an evaluative statement, but I won't do that. What I would do is, I will just place it that education जो है असल के अंदर वो प्राइवेट गुड भी है. ओके, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर दे दी है, बट ऑल्सो इसको मैं मेरिट गुड के अंदर क्लासिफाई करूंगा. I think that is why they've actually taken it as an evaluation, because the question is assess whether education should be classified as a public good rather than classified as a merit good. So we're saying कि नहीं जी, ऐसे नहीं हो सकता. It cannot be classified as a public good. It should be classified as a merit good. Merit good की फिर क्या conditions हैं? What makes anything a merit good? तो हम ये कहेंगे कि मेरिट गुड्स जो होते हैं वो अंडर कंज्यूम्ड एंड अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर, एंड दे आर डिजायरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट्स point of view, and they want to increase its production. ओके, उसके अलावा ये थोड़ी सी डेफिनेशन वाली पॉइंट हो गया. um, let me go back to the question so I can clarify. If I don't want to deviate, assess whether education can be classified as a public good rather than classified as a merit good. Under no circumstances it could be classified as a public good. It's actually a private good. मेरिट गुड की क्लासिफिकेशन हमने मेरिट गुड को भी डिफाइन कर दिया और उसके अंदर प्लेस इन कर दिया. What else can I put in there? A few things that they might even want to you to suggest over here is कि जहां तक पब्लिक गुड की बात होती है, पब्लिक गुड के अंदर हमें ये अंडरस्टैंडिंग है दैट पब्लिक गुड हैज टू बी प्रोवाइडेड by government. There is no other choice because of no profit incentive. Private sector would never do it. लेकिन merit good के केस में, because it benefits the third party, we say the government should provide it, क्योंकि free market जो है वो उसको underestimate करती है. Government should provide it due to its under provision, you know. So in that context, I feel कि अब ये क्वेश्चन के अंदर I have pretty much answered most of the things, and I can give my sort of like a final conclusion, or my evaluation that it will be classified as a merit good, and not as a public good. ये मेरा final conclusion होना चाहिए, which I should know from the start. ठीक है. One of the things जो इस टॉपिक से relevant है, which I would like you to always keep in mind is, अगर गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करनी हो पब्लिक ओवर द मेरिट और मेरिट ओवर द पब्लिक, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स पब्लिक.
and then towards the merit. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देखें जी, द रीजन व्हाई देयर इज अ प्रायोरिटी लिस्ट इज बिकॉज पब्लिक गुड्स के अंदर अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी तो चांसेस आर कि ये गुड कभी प्रोवाइड होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से द पब्लिक गुड ट्रम्प्स द मेरिट गुड। अगर गवर्नमेंट मेरिट नहीं प्रोवाइड करती, बिकॉज दे आर प्राइवेट एंड प्रॉफिट्स कैन बी मेड ऑन दैम, एटलीस्ट फॉर दोज हु कैन पे फॉर इट, तो मार्केट इकोनॉमी कैन डील विद दैट एट फर्स्ट। और फिर जो लोग हैं जिनको इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही, government can put in some extra cash over there also, and that will be less of a burden on the public sector as compared to the private sector. So this is how a 12 marker is supposed to be written. इसका एक तरीका होता है मार्किंग लेने का। I can put the marking scheme in front of you, and let's take a look at the marking scheme here. This is the marking scheme for it. We haven't discussed evaluation, right? I have sort of in a sense ये वाला जो part है ना जिसके अंदर I'm trying to answer कि should it be classified as a public good rather than classified as a merit, and when I was trying to make my final evaluations over here, this would be the final sort of evaluation कि मेरिट गुड जो है वो एट द एंड ऑफ द डे, सॉरी, जो एजुकेशन है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो मेरिट गुड में ही क्लासिफाई होगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के उसके अंदर एक्सक्लूडेबिलिटी है एंड वो Wait, अंडर so you said प्रोड्यूस्ड as होते a हैं। merit good नहीं qualify होगा, right? Or Merit will good it as qualify? no, it will be qualified as a merit good Ah, and not public good. या ये okay. तो मैं स्टार्टिंग से मुझे पता है कि जब कोई चीज एक्सक्लूडेबल है और राइवलरी है तो वो पब्लिक गुड तो Yep. हो ही नहीं सकता। सो आई एम जस्ट डूइंग माय उसकी डेफिनेशन देना और उसको प्रूव करना, दैट इज जस्ट फॉर्मेलिटी दैट आई एम डूइंग। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये बात को प्रूव करना है कि वो मेरिट गुड है और वो अंडर प्रोड्यूस्ड है फ्री मार्केट में, तो गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ेगा और उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ टेल्स मी कि ये गुड जो है वो मेरिट है और वो पब्लिक की क्वालिफिकेशंस में नहीं आता, राइट। सो उसको मैं मैंने फिर प्रूव किया मेरिट में। I ओके। would like मैं evaluation की जहाँ तक बात है, like I would write exactly what you've written it for AO1 and AO2, right? But AO3 के लिए I would go and like मैं नीचे like I would like write whatever you've written. I would also be like कि government would intervene into this, and they would try to make more schools and do more actions ताकि education ताकि the education is more क्या कहते हैं is uh, it is actually more towards excludable or non-excludable. It tends towards more public more factors that qualify public good. जैसे नो नो they'll नो try नो नो to नो, you can't do that. Because the thing is, if the state is providing it, does not make it a non-excludable. Even if the state but is they're providing, shifting towards that. yeah, but doesn't matter. The good itself is excludable. अब वो government provide करे या ना करे, the good is excludable. Let's Okay. take this out of our minds कि अगर कोई चीज government provide कर रही है तो वो non-excludable हो गया. No, that's not how it works. If the Mhm. government is providing it for free, that's a separate thing. That means कि आप कह रहे हो कि public sector is involved, but that doesn't qualify it as a public good. A public good, there is no way to exclude people. Education में there will always be a way to exclude people if you want to. So the But better government discussion what you were doing, I think what where you were at the right track before the last element was that आप ये कह सकते हैं कि देखें जी, अ, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया एजुकेशन को, तो प्राइवेट सेक्टर तो Mhm. सिर्फ अंडर प्रोड्यूस करेगा और फिर वो जो लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा, वहां पे आप कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड इंटरफियर एंड प्रोवाइड दोज। आई अग्री, द गवर्नमेंट शुड डू दैट,
but that does not make it a public good. It's just that there is an intervention by the government, and the government is just fulfilling the shortfall. Good की classification will not change as a result of them giving free. इट्स जस्ट द सेम एज जो Right. एक दफा केस स्टडी आया और उसमें कहा कि भाई रशिया के अंदर स्कूल है और वहां पे वो लोग बच्चों को लंच फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो क्या लंच पब्लिक गुड कह सकते हो क्या आप? तो हम कहते हैं नहीं भाई, एट द एंड ऑफ द डे जब वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है तो फाइन, फ्री में दे दे, कोई मसला नहीं है। बट लंच के अंदर इवन इफ द स्टेट वांट्स टू एक्सक्लूड पीपल, दे कैन से इस बच्चे ने फी दी है या पैसा दिया है तो मैं इसको लंच दूंगा, और इसने नहीं दिया तो मैं इसको नहीं दूंगा। तो इफ द क्लास माई अबिलिटी टू एक्सक्लूड एग्जिस्ट, that means it is not a public good, it is a private. They are two different things. Good ki classification is one thing, state providing it or not providing is a separate thing in itself. ठीक हो गया? All right. So I could write कि the private sector could intervene and provide Public sector. education, but could Public sector. but like public sector would intervene and fill out the shortfall, right? Where people that are not Yes. getting the education, they can get it. Yes. All right. And they ठीक should है. actually. We say But they should do that. and also another question, for example, in these questions, the 12 markers, can we um bring an example as well? For example, in Pakistan, there is like heavy information failure in regards to education, especially in rural and semi-urban areas. So to solidify the fact that oh, it is actually a merit, good, we could be like कि Pakistan में there's a lot of information failure, and as a result, not only is it underconsumed, but because it's underconsumed, it's also underproduced. Like उसके कोई marks होते हैं, does that make your essay better? Apart from what everything we've written, because I would do exactly what you've done, like here. Yeah. If you can do that, if it is linking to your question and it is helping you at the end of the day come to the conclusion Uh-huh. कि एजुकेशन की क्लासिफिकेशन किस में जा रही है, no problem whatsoever. It's building upon whatever you've written in your analysis. It's acceptable as long as it's not wrong and it stays consistent with the idea. All right. It's open. Thank you so ये much. सिर्फ इशू ये हो जाता है कि it becomes a discretion of the examiner कि उसको वो पॉइंट अच्छा लगा कि नहीं लगा, because evaluation के अंदर there are not many points written. So what I would like to do is I would like to show you कि इसके अंदर examiner exactly क्या चीजों को देख रहा है. So if you see on your screen, the way the examiner is marking this is education is classified as a merit good. So it starts off with almost like a conclusion because it is a private good with the characteristics of being both rivalry and excludable. अब ये knowledge and understanding में classify हो गया. It can therefore be provided through the market because it is possible to charge a price for it, although it can also be provided by the state. ठीक है? तो excludability का element के बाद आपने कहा कि भाई ये तो असल में private good. A public good is distinct from a private good because it has the characteristics of both non-rivalry and non-excludable and is therefore difficult, if not impossible, to charge a price for it due to existence of the free rider problem. It therefore has to be provided by the state. तो पहले हिस्से के अंदर एनालिसिस में आपने क्या किया है, आपने बता दिया ये मेरिट गुड होना चाहिए क्योंकि ये एक प्राइवेट गुड है। असल में मेरिट गुड और ये प्राइवेट है, इसका लिंक इन्होंने नहीं बनाया है, विच आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम ओवर हियर। वो चीज इन्होंने इवेल्युएशन में लेके गए हैं। आई वुड लाइक टू डू दैट इन द एनालिसिस कि मैं ये भी बताऊं कि ये है तो मेरिट, लेकिन मेरिट गुड प्राइवेट होता है, ये प्राइवेट और पब्लिक का डिस्टिंक्शन है असल के अंदर। और फिर नीचे उन्होंने ये किया है
कि public good can only be provided by the state. Okay, I have no issues with that. Merit goods will be underprovided in the free market and government should intervene to increase provision. अब ये बता रहे हैं कि मेरिट गुड क्या होता है, फ्री मार्केट क्यों प्रोवाइड कर देता है, गवर्नमेंट को क्यों इंटरफियर करना पड़ता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डिमांड एंड अंडर प्रोविजनिंग. If the government, if the demand for education is extremely low in a country, when provided through a market, the government could decide to provide the entire through. What this means is कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मेरिट गुड की डिमांड बहुत ज्यादा हो, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि बहुत बच्चे हैं और एजुकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा है. अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ेंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो कभी भी इनफ नहीं बनाएगा, तो स्टेट शुड इंटरवीन. लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहालत ज्यादा है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ इट, इंफॉर्मेशन फेलियर बहुत ज्यादा है, एंड देर नॉट पर्पसली नॉट सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल, तो हम कहते हैं बहुत छोटी डिमांड है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है उन लोगों के लिए स्कूल बना देगा जो पे करके प्रोड्यूस करने को काम करने को तैयार है. ऐसी सिचुएशन में जब लो डिमांड है तो ये पॉइंट कह रहा है कि स्टेट माइट जस्ट सिंपली प्रोवाइडेड देमसेल्व्स उसको, क्योंकि स्टेट पे कोई ज्यादा बर्डन नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ वेरी लो डिमांड. लाइक फॉर एग्जांपल जापान की केस के अंदर जो है पॉपुलेशन कम हो रही है और बिलो 16 पॉपुलेशन बहुत कम है, तो स्टेट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है. लेकिन पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर जहां बहुत बड़ी है, आपकी ऑलमोस्ट लाइक 2.7 मिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल एंड देयर सो मेनी किड्स हु आर ऑलरेडी इन स्कूल, ये तो बहुत मैसिव एक्सपेंस है गवर्नमेंट के लिए. तो गवर्नमेंट माइट अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू डू वट एवर दे कैन, और फिर जो लेफ्ट ओवर है वो खुद कर लें, तो दैट माइट हेल्प. बट द मेन थिंग इज, द कंक्लूजन इज, एजुकेशन should be classified as a merit good rather than public good because of everything that we have discussed ऊपर. I think इसकी marking scheme थोड़ी सी confusing है. The question would have been a lot more straightforward अगर ये 8 मार्कर होता. 12 मार्कर की वजह से they need just a little bit more discussion on a little bit main scope से थोड़ा सा बाहर के एरिया को भी थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी था. Um, right? So I think what they've done in the marking scheme is that instead of discussing more about कि ये merit public good है कि merit good है, they have done more of a discussion towards कि क्या ये private sector को provide करना चाहिए था कि public sector को provide करना चाहिए था. Marking scheme is actually more uh, inclined on that side of a discussion. But unfortunately, if the marking scheme is made in that way, the checking will be done in that way. So that's the sad part of this. ठीक है जी. Uh, सर बट फिर लाइक इन दिस लाइक दिस क्वेश्चन यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं था. लाइक इंडिकेशन था whether we were assessing that okay like public या merit है, but like इतना like I couldn't tell कि question was asking कि आपको ये भी assess करना है whether it would be private, whether it would be provided by like like the public or the private sector. I know that's a fundamental discussion within like good, just a public are always provided I by know an economics. So how do you get it? Like how do you? you have no way. That's the problem. That's why the marking, you get 26 out of 60 and you get yourself an A, because the marking scheme is sometimes very accurate and sometimes it becomes unpredictable. You what you make sure you do is whatever the main requirements are, you do that, and then you also talk about a little bit of the outskirts of those importance. Like for example, if I know the discussion is about merit or public good, then I know public good ke andar I need to do the basics, which is discussing the definitions of them, and then also discussing the free rider problem, and also discussing the fact that because of the free rider problem,
private sector will never produce it. I will just put it out there. And merit के case में they are underproduced and the market can provide. लेकिन at the same time, we do want the government to interfere in it also. So ये जो bank of knowledge है about some things, it should just come to you instantly when you hear the word merit or public. There are certain set of informations that are just there and you need to discuss those. एंड जब 12 मार्क का क्वेश्चन होता है तो आपका जो स्कोप ऑफ द आंसर है वो थोड़ा ज्यादा वाइडर हो जाता है तो यू माइट वांट टू टच अपॉन सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ओवर देयर बट रिमेंबर टू कम बैक टू द प्योर थिंग बाय द एंड that is the problem. And honestly, in last 3 years of checking Cambridge examinations, I don't have an answer for you because there is inconsistency over there. Um, and June ke andar this year, though, I saw very serious ones, even with 8 markers. But that's how it is. So what we want to do is we want to throw as many darts as we can, and I've repeated this idea before also. कि you gotta go an extra mile and do need to write some extra stuff over there. Uh, I don't. I can't explain you any. So you need to know your content and No, sir. Completely understand. It's a big shift for me क्योंकि वो bio, chem, physics, they require like specific wordings. So it's a bit a bit different, but I will like adapt to it. yeah. So होगा ये problem आएगा, but as you start doing this more and more often, you will see that there is a consistency, at least in terms of एक certain chapters के अंदर हर ऐसे के अंदर there is a set of certain information that needs to be dealt with. जो 2025 के क्वेश्चंस हैं उसमें तो जो रिसेंट मार्किंग स्कीम है 2025 की उसमें क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत ज्यादा एक शिफ्ट आ गया है तो वी वांट टू assess those also and eventually we'll come to that later on. All right. Right, sir. So I wanted to shift a little towards an economic system per discussion because remember हम market और उसकी तो बात कर ही रहे हैं बहुत देर से. तो एक क्वेश्चन है 12 मार्क का जिसके अंदर वो कहते हैं assess whether a planned economic system should always switch to a mixed economic system. तो क्वेश्चन का जो है एक डायरेक्शन ऑलरेडी इन प्लेस है. द क्वेश्चन इज मेनली टॉकिंग अबाउट कि हमें क्या स्विच करना चाहिए. ठीक है, क्या हमें स्विच करना चाहिए फ्रॉम ए प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम टू ए मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. तो हमारा जो क्वेश्चन का मेन डायरेक्शन होना चाहिए वो यही है कि क्या इसको स्विच करना चाहिए कि नहीं स्विच करना चाहिए. इवैल्यूएशन बीइंग द टर्म ऑलवेज. ये मेरा इवैल्यूएटिव लास्ट 4 मार्क के लिए. दिस इज व्हाट आई विल ट्राई टू इवैल्यूएट. ऑलवेज स्विच कि नहीं. If you're able to assess the question is mainly about advantages and disadvantages of each system. That's what it is. The problem that we have is kids spend a lot of time in a 12 marker explaining the terminology. And they go on and they start talking about कि planned economy के अंदर जो factors of production होती है उसकी जो ओनरशिप होती है वो तो पब्लिक सेक्टर के पास होती है और पब्लिक सेक्टर जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है. और इसके अंदर जो है स्टेट डिसाइड्स करती है किसको क्या मिलेगा एंड ऑल ऑफ दैट. आई अंडरस्टैंड दैट्स perfectly fine for the definition, but you don't want to go into a lot of details and trying to explain the terminologies. One thing जो मैंने पार्ट बी के अंदर यानी 12 मार्क में कंसिस्टेंटली देखी है वो ये है that there are no marks for definition of an idea. उसी तरह से जैसे अगर आप मिक्स कहते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मिक्स के अंदर जो है आपके पास पब्लिक सेक्टर भी है, आपके पास प्राइवेट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो इंडिविजुअल्स और फर्म्स ओन करते हैं रिसोर्सेज को. आई अंडरस्टैंड दैट यू
you know this, individuals and firms own it, और आप यहाँ कहते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट इज द मेन आइडिया, ठीक है, और पब्लिक के अंदर जो है वो स्टेट ओन करता है एंड वेलफेयर इज द मेन आइडिया। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर इज जीरो मार्क फॉर इट, देयर इज नो मार्क फॉर इट। द क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं एंड यू कैन सिंपली से advantages and disadvantages of a planned economy. Once you do that, then you do disadvantages of planned economy. तो ये क्या है? एडवांटेजेस के अंदर मुझे पता है कि अगर स्टेट इज डूइंग एवरीथिंग, तो स्टेट जो है वो तो वेलफेयर के लिए काम करता है, तो स्टेट जो है फिर पब्लिक गुड्स भी प्रोवाइड करेगा, स्टेट जो है वो अच्छे से मेरिट गुड्स भी प्रोवाइड करेगा सबके लिए, स्टेट जो है वो डीमेरिट गुड्स को स्टॉप करने में भी इन्वॉल्व होगा और नहीं प्रोड्यूस करेगा। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस टू दैट। या या उसके अलावा स्टेट ये भी हो सकता है कि स्टेट माइट बी इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग environment, कि पोल्यूशन ना हो वगैरह, सो दे माइट बी माइंडफुल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यू कैन स्पेंड अबाउट लाइक अ पेज ऑन explanation of the advantages. 3/4 of a page is also good enough, but it should be nicely explained in detail, these advantages. But then planned also has certain disadvantages. What are those disadvantages? प्रॉब्लम है कि जब सिर्फ प्लान्ड ही है, प्लान्ड के अंदर सिर्फ स्टेट ही है, तो then there is no competition. And when there is no competition, there is inefficiency and resources are not used in its proper way. When there is no profit incentive, there is no innovation, there is no variety, there is poor quality of goods and services because there is no incentives. तो हम इस तरीके से कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वंस यू डन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अगर तुम ये दोनों लिख लेते हो, तो मैं तुमको तकरीबन लेवल 2 के ऊपर, आउट ऑफ 8, रिमेंबर द आंसर्स आर चेक इन लेवल्स, तो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, 1 से 2, 3 से 5, एंड देन 6 से 8। मेरी नजर में इफ यू डू प्लान के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आई विल गिव यू लेवल 2 up to 5 marks for it if it's nicely explained. लेवल 3 इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज तुमने क्वेश्चन का एक दूसरा बड़ा मेन एलिमेंट को डिस्कस नहीं किया हुआ है, विच इज द मिक्स्ड वाला एलिमेंट। तो व्हाट आई वांट टू डू इन द मिक्स्ड वाला एलिमेंट इज कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, मिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं और मिक्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। काफी हद तक आई सीन कि बच्चे इसमें मिक्स की जगह मार्केट का डिस्कशन लिख लेते हैं, तो आई वांट यू टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दैट। सो हमें ये बात पता है कि मिक्स्ड के अंदर जो है आपके पास दोनों हो जाते हैं, राइट? यू हैव बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड यू हैव द पब्लिक सेक्टर। तो एडवांटेजेस के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, एंड दैट इज अ बिग एडवांटेज राइट हियर। द एडवांटेज ऑफ मिक्स कुड बी कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट के लिए, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट की वजह से आपके पास इनोवेशन भी मिल जाती है, वैरायटी भी मिल जाती है,
अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है, वो प्राइवेट सेक्टर कर लेता है, कंज्यूमर की वट एवर द कंज्यूमर वांट्स, वो सारे एडवांटेजेस भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है। और साथ ही में स्टेट के होने की वजह से आपको वेलफेयर का आइडिया, और जो आपका पब्लिक गुड्स जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करता, आपको पब्लिक गुड्स भी मिल जाते हैं। और मेरिट के अंदर जो अंडर प्रोविजनिंग थी, मेरिट की अंडर प्रोविजनिंग भी खत्म हो जाती, क्योंकि स्टेट आके वो बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता, तो वो अंडर प्रोविजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। या फिर डी मेरिट के अंदर जो ओवर एलोकेशन हो गई है, उसकी जो ओवर प्रोविजनिंग का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कैन कम इन एंड दे कैन मेरिट के अंदर दे कैन गिव सब्सिडी, दे कैन डायरेक्टली प्रोवाइड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, इसको आप डायरेक्ट प्रोविजन कहते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट कैन इम्पोज taxes and bans on certain harmful goods. So these are the advantages that I'm getting. लेकिन मिक्स के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? That is the problem one that kids feel कि यार we so far what we've always done is कि मिक्स के तो हम advantages बताएं. So the thing is you must talk about the disadvantage of mixed for this answer to qualify. Um, वैसे तो both sides of the discussion के लिए to get a higher up to 8 marks. डिसएडवांटेजेस के अंदर मुझे एक ये प्रॉब्लम है कि ठीक है जी, गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, बट द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नाउ दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू नो कि गवर्नमेंट को अगर इंटरवीन करना चाहिए तो किस हद तक इंटरवीन करना चाहिए, कितने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने चाहिए, कितनी इजीनेस बिजनेस रेगुलेशंस में करनी चाहिए, कितना मेरिट गुड्स के अंदर कितना बनाना चाहिए। Now, these are difficult things to figure out for a government कि कितना शॉर्टफॉल है, how much merit to provide, right? इसका कितना क्वेश्चन। रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस हद तक रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएं, that is the problem. Remember, we're not writing disadvantages of a market economy. We need to write disadvantages of a planned, sorry, mixed economy. तो mixed economy के अंदर भी going back to the now evaluation, असल तो evaluation, अच्छा, remember you don't have to write a lot of disadvantages, you should at least write one to qualify कि ठीक है जी, आपने जो है, if I was to show you marking scheme, let me show you the marking scheme for it. Yeah, right here. Potential advantages and disadvantages of planned, potential advantages and disadvantages of mixed. तो लेवल 3 के अंदर इफ यू डोंट डू डिसएडवांटेजेस, यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस, मैं तुमको लेवल 3 का लोअर साइड दूंगा, आई वोंट गिव यू लेवल 3 का हायर साइड। ठीक है। टू गेट लेवल 3 का हायर साइड ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर तुमने मिक्स की जगह मार्केट के बारे में लिख दिया, तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आई विल नॉट गिव यू मार्क फॉर दिस, एंड मैक्सिमम यू कैन गेट इज लेवल 2 फॉर डूइंग वेरी गुड potential advantages and very good potential disadvantages, उसके अलावा मैं तुमको मार्क नहीं दे सकता। तो you need to write all of these to get the highest level 3 mark। और फिर उसके बाद इवेल्युएशन के अंदर आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज अबाउट शुड यू ऑलवेज स्विच टू ए मिक्स्ड इकोनॉमी। आई नो माय आंसर बिफोर हैंड, विच इज कि देखें जी, हमने ये जरूर देखा है कि मूविंग टूवर्ड्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी is advantageous both to consumers, both to producers, even for the government to get taxation and all. But it's just about finding the right balance, which is the problem.
ठीक है, तो माई इवेल्युएशन इज अबाउट too much maybe might be too bad, and too little might be too bad. ठीक है, so it may not always be a very good idea, लेकिन प्लान से मिक्स जाना चाहिए, while keeping in mind कि कितना इंटरवेंशन होना चाहिए. आई थिंक इफ यू नोटिस ओवर हियर, जिसकी इवैल्यूएशन इन्होंने दी है, for an evaluation of both the advantages and the disadvantages written above and mixed economy leading to a valid. They haven't given you much evaluation के अंदर, it's very open ended. um, I think your answer should be that there should always be a switch. ठीक है, it's just that to what degree should there be a switch. ठीक, तो वो मेरा आंसर का मेन एसेंस होना चाहिए. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? No, sir, everything's clear. या, सो देन यू मेक एन अटेम्प्ट ऑन दिस वन. ये एक अच्छा सा सवाल था इसका. उसके बाद moving on, because we've talked about a little bit about the government interventions, I think it's time that we can actually go a little bit of government intervention based question जो नवंबर 23 के अंदर आया है. I'll take you to November 23. Sir, actually, Uh, this is not a question like related to our course or anything, but like are like the जो models देखते हैं government के like capitalism, socialism, are they based on like these markets? they Like can be for considered a example, part like of this. They can be considered a part of this because the thing is that we do like to somehow, we are more drawn towards the idea of capitalism, socialism, and communism. Uh, yeah, market economic systems कि एक बहुत, इट्स अ मच मोर ब्रॉडर आइडिया, और उस ब्रॉडर के अंदर दीज एलिमेंट कम्स इन. अगर आप कहते हैं कि कैपिटलिज्म इज मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, आई वोंट से कि इट्स नॉट. ठीक है, बट आई yeah, कांट से कि कैपिटलिज्म इज मार्केट इकोनॉमी. इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग इन द बिगर आइडिया. कैपिटलिज्म के अपने uh, बहुत सारे फीचर्स हैं जो उस बाउंड्री के अंदर भी ऑपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो यू माइट वांट से कि कैपिटलिज्म के अंदर यू अलाउ द इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स टू मेक द डिसीजन, एंड यू हैव द प्राइवेट सेक्टर हु वर्क्स, for their own self-interest, and then eventually they benefit yeah, the entire economy. But एक बड़ा जो प्रॉब्लम उसके अंदर हम एक डिस्कस करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर कैपिटलिज्म शुड हैव कंपटीशन. बट हमने कैपिटलिज्म के अंदर ओवर द इयर्स देखा है दैट देयर इज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर which allows exploitation through monopoly. तो नाउ yeah, कैपिटलिज्म का प्योर आइडिया तो कहता है कि कंपटीशन होता है एंड एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम इट, बट वी ऑल्सो सीन कि इसमें तो एक्सप्लॉयटेशन होती है. ना ऑल दिस आइडिया इज इनसाइड द इकोनॉमिक सिस्टम का फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट में, बोथ द एडवांटेजेस एंड बोथ द डिसएडवांटेजेस, राइट. लेकिन yeah, कैपिटलिज्म के अंदर आप ये नहीं बोलते हो कि ये कैपिटलिज्म के अंदर कंपटीशन होना चाहिए, पर उसमें तो एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कैपिटलिस्ट के साथ कि दे आर नॉट एबल टू डिफेंड दैट आइडिया बिकॉज it was supposed to have competition. The whole idea of capitalism leading to people getting the best price and the best goods, and then we've seen Amazon becoming such a big giant that it just killed yeah, the competition, and then it became a big, you know monopoly. And now instead of competition, there is a one big monopoly, and that monopoly is making crazy amount of money, and they're exploiting their workers, and they're exploiting that. ये कैपिटलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट जा रहा, यू नो उसी yeah, तरह से yeah, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, तो सोशलिज्म के अंदर ही आप कहते हैं कि चलें, ये तो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम का आइडिया है बिकॉज द स्टेट इज सपोज टू बी
providing for the welfare of everybody, and they should be providing enough to everybody, and सबको देखते हुए होना चाहिए and all of that. तो one might say कि socialism, communism are that. लेकिन जब आप socialism और communism को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, so there are a lot of political elements which economists says that, you know what, that's not our concern. We don't want to talk about your political and social differences. तो अगर आपने उसके मेन आइडिया के अंदर इनको डाल देना है तो दैट्स फाइन, बट डोंट से Yeah. कि कमांड इकोनॉमिक सिस्टम इज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. They might have some overlapping, but those ideas are, they have some fundamental things in them. Yeah. ठीक. Because sir, I was really like recently, like watching like a debate on like capitalism versus like other ideologies, and like there's no way to really matlab, abhi we see a lot of wage gaps, like a livable wage versus like the minimum wage. So like the discussion was that even if you increase it, big monopolies like Walmart and Amazon would be able to cover them up because they're like big companies, and small businesses would generally go out of business because cost per jati hai. Like it was like it ticked me off, like because they were talking about an economic system and we talked about it in class in your lecture, about market economic systems and all. So I thought I'd just like ask that question. Yeah. um I was also watching one of the interesting things इसी को लेके. How you say कि government should intervene through minimum wages. Okay. Now we say minimum wages are Yeah, good because they protect the vulnerable and the unskilled in the economy. But turns out कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में मिनिमम वेज बढ़ाते हो ना, तो एक्चुअली आप प्रोटेक्ट तो करना चाह रहे हो लो इनकम लोगों को, बट टर्न्स आउट yeah, कि उसमें ये होता है कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं, बिकॉज दे आर सच अ बिग जायंट्स एंड दे हैव सो मच मार्केट शेयर, they have no problem paying their workers the minimum wage. Okay. yeah, क्योंकि they make good money. लेकिन what about those small businesses? स्मॉल बिजनेसेस जिनके exactly. पास जो छोटे लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस के पास ज्यादा प्रॉफिट्स भी नहीं होते, बट जब आप मिनिमम वेज बढ़ाते हो तो यू सॉर्ट ऑफ लाइक किल दोज इंडिविजुअल्स. सो मिनिमम वेज की एक तो ये आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है कि दैट एक्चुअली favors the large exploitation based companies than small scale. So it's not a solution, it creates even a bigger problem. So one might use that Yeah, argument to say that they can see government intervention is a bad idea because there are always pros and cons. So economics कहता है यार, you know what? That's a political argument that what you're making कि क्या होना चाहिए. What we're telling you is कि अगर आप ये करते हैं, आप मिनिमम वेज लगाते हैं तो उसके ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस है. We're just putting it out there. अब आप yeah, पॉलिटिकल डिसीजंस और अपने पॉइंट स्कोरिंग आप खुद करें. दैट इज नॉट आवर आइडिया. we're just telling you how it works and under what economic system एक गरीब मुल्क और एक अमीर मुल्क, एक अच्छा मुल्क जिसमें गवर्नेंस स्ट्रांग है वर्सेस दूसरा मुल्क जिसमें गवर्नेंस वीक है, तो these policies are going to have an impact in certain ways. Now you assess what you want to do. We're just putting it out there, right? So exactly, that's what we yeah, are talking about in this whole thing. So, yeah, the question that I want to deal with now is यही essential goods and services को लेते हुए, I want to talk about how the government and its interventions, और इस तरह के क्वेश्चन को फिर आप किस तरीके से डील करेंगे. So take a look at this question. This question is from November 23 variant 21. Explain why a government might decide to increase its direct provision of essential goods and services and consider whether such a policy is always likely to be successful. Now, for this question, the examiner is actually interested when he says essential goods and services. The examiner is thinking that बच्चे essential के अंदर they're going to be talking about like
public and merit, you know. But also don't forget that essential के अंदर even private goods can go in, like food and shelters and things like that also. So make sure that उस अपने answers के अंदर you do keep space for those kids जो जिन्होंने पूरे साल इकोनॉमिक्स theoretical point से नहीं पढ़ी है, and right now when they see this question वो essential को they just take it कि यार food और services और shelter और ये भी तो essential चीजें हैं, and they write their answers in that way. Kids who have studied in terms of classification of goods and services को उनके आंसर्स में आप डेफिनेटली देखेंगे कि वो मेरिट, डीमेरिट, पब्लिक गुड्स और इसके डायमेंशन के अंदर अपना आंसर लिखेंगे. सो द आंसर शुड फैक्टर इन both the information. So पहले पार्ट के अंदर why a government might increase certain goods and services की provisioning. तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि जी जो आपके certain goods and services, why government? Well, the government um, explain why government might decide to increase its direct intervention in certain essential goods and services. So I'm just trying to think how do I separate the two? Let's suppose I want to answer the question in terms of merit and demerit. ठीक है. तो हमें ये पता है कि एक तो नंबर वन गवर्नमेंट का रोल क्या है. ठीक है, व्हाट इज द गवर्नमेंट रोल. क्योंकि पहला क्वेश्चन है व्हाई द गवर्नमेंट माइट डिसाइड टू डू समथिंग. तो जो मेरा AO1 है, because it's an 8 marker, so AO1 will be marked separately. So what is the role of the government? तो हमें ये पता है कि the role of the government is to make sure that essential goods and services are provided. Are provided. For example, public goods भी essential है, merits भी essential है, food and shelter जैसी चीजें भी important हैं. मेडिकेशन मेरिट में आ जाता है, तो इफ यू डूइंग इट सेपरेटली बी माय गेस्ट, बट उसको आप मेरिट में जरूर डालें. ऑल दीज थिंग्स लाइक वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन. इनफैक्ट यू शुड इंक्रीज योर ब्रीफ ऑन दैट कि गवर्नमेंट का रोल है कि यू नो व्हाट, मेडिसिन जो होती हैं या एजुकेशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसके बड़े फायदे हैं टू द स्टेट. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टेट कैसे ये प्रोवाइड करेगी. तो हमें पता है कि स्टेट कैन प्रोवाइड दीज थ्रू, बिकॉज स्टेट के पास देयर इज अ वे टू डू इट, राइट. दे हैव द टैक्स रेवेन्यूज टू फाइनेंस दीज एक्सपेंडिचर्स. तो पहले क्वेश्चन का तो ये जवाब है कि व्हाई गवर्नमेंट माइट डिसाइड टू डू दिस. एंड इसकी फिर जब तुम एनालिसिस में जाओगे तो यू विल कम टू अ डिस्कशन वेयर यू से कि यार गवर्नमेंट हैज टू इंटरफियर इन दीज गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरिट के बारे में कहते हैं कि मेरिट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, तो यू शुड नाउ हैव द डिस्कशन कि क्योंकि मेरिट गुड्स जो है वो अंडर कंज्यूम्ड होते हैं एंड अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यू नो. तो इसकी वजह से स्टेट शुड गेट इन्वॉल्व, क्योंकि स्टेट फील्स कि यार ये वाले गुड्स तो डिजायरेबल है, यू नो, बिकॉज दे बेनिफिट द इकोनॉमी. अगर आप पब्लिक के बारे में कहते हैं, तो अगर आपका जवाब पब्लिक के है तो यू नो द होल आइडिया ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबल है, यू नो, एंड नॉन राइवलरी है, एंड द होल फ्री राइडर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, वरना ये चीजें बनेंगी ही नहीं. फूड और उसके केसेस के अंदर भी आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि फूड और शेल्टर अगर आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया
प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर बिकॉज दीज आर वेरी नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज एंड खास तौर पे अगर किसी किस्म की कैटास्ट्रोफी आ जाती है लाइक फ्लड्स एंड थिंग्स लाइक दैट तो मार्केट्स तो फिर लोगों को एक्सप्लॉइट भी कर सकती है तो डेफिनेटली तो वी से कि गवर्नमेंट जो है उसको इंटरफियर करना चाहिए एंड दे शुड प्रोवाइड दीज गुड्स यू नो इवैल्यूएशन के अंदर वंस यू डन दिस एंड यू प्रूवन कि हाँ जी गवर्नमेंट्स की इंटरवेंशन इज जस्टिफाइड then you want to talk about consider whether such a policy will is always likely to be successful. अब ये always likely to be successful का जो डिस्कशन है कि गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो क्या ये पॉलिसीज हमेशा इफेक्टिव होती हैं कि ये हमेशा इफेक्टिव नहीं होती। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है जब ये गुड्स को प्रोवाइड करेगी खास तौर पे मेरिट के डिस्कशन के अंदर तो मेरिट के अंदर सबसे पहले हाउ मच का प्रॉब्लम है। हाउ मच शुड द गवर्नमेंट प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड बिकॉज वो जो आप कह रहे हो अंडर प्रोड्यूस्ड है उसके पास किसके पास उसका नंबर है कि आप कितना कम या कितना बनाने की जरूरत है और मार्केट कितना फेल हो रही है। सो हाउ मच शुड गवर्नमेंट प्रोड्यूस। दूसरा, क्या गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं इतना कि वो प्रोवाइड कर ले। तीसरा, क्या isn't there opportunity cost involved? Opportunity cost is कि यही चीज आप कहीं और यूज कर सकते थे किसी और चीज को बनाने में प्रोवाइड कर सकते थे। तो क्या हमें एसेंशियल में प्रोवाइड करना इतना जरूरी है कि हम दूसरी कोई इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में। क्या हमें आप कहते हैं जी खाना इंपॉर्टेंट है। आई अग्री खाना बहुत जरूरी है बट at an expense of not providing roads or at the expense of not providing education or healthcare, which has future implications. So there's a whole element of an opportunity cost का involvement over here. तो ये सवाल है कि भाई अगर if the government always does that, तो are they effectively doing it? और are your policies always क्या गवर्नमेंट ने जो पैसे लगाए हैं इन चीजों के अंदर क्या लोगों ने मेरिट गुड की कंजम्पशन बढ़ा दी एज अ रिजल्ट ऑफ यू मेकिंग मोर स्कूल्स। पंजाब के अंदर आपकी गवर्नमेंट ने बहुत सारी यूनिवर्सिटियां खोल ली है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर में पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत स्पेंडिंग की है लेकिन वहां 14 बच्चे हैं 3-4 टीचर्स हैं इनइफेक्टिवली पूरा स्कूल ऑपरेट कर रहा है। वही पैसे आप किसी और चीज में लगा देते तो दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर थिंग। तो क्या गवर्नमेंट की जो वो असेंशियल समझते हैं और उसमें जब वो अपनी एक्सपेंडिचर्स और फंडिंग करते हैं तो हाउ सक्सेसफुल वर दे in doing that, that is your discussion of evaluation because they will not always be successful, which is my end conclusion after discussing all of that. तो ये आपका फिर एक क्वेश्चन आ जाता है विच आई फेल्ट कि थोड़ा सा आपका कन्वेंशनल आंसर स्ट्रक्चर से हट के थोड़ा सा क्वेश्चन चला जाता है। राइट, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? No, sir. I just ये बहुत open-ended सवाल है, right? So is there like a strict marking scheme for this, especially in the evaluation part? द स्ट्रिक्टनेस इन द मार्किंग स्कीम गोज कि अगर ऊपर आपने मेरिट को डिस्कस किया है गवर्नमेंट के रोल के अंदर कि Right, गवर्नमेंट का क्या रोल है उसमें कहाँ से ये पैसे आएंगे एसेंशियल गुड्स के अंदर उनका क्या रोल है। इफ यू टेकन द मेरिट गुड्स देन एनालिसिस के अंदर दे शुड बी डिस्कशन अबाउट द मेरिट गुड एंड देन इवैल्यूएशन के अंदर दे शुड बी डिस्कशन अबाउट द मेरिट गुड। ये right. कंसिस्टेंसी नीड्स टू फॉलो थ्रू। सेम Okay, अगर ऊपर आपने फूड और शेल्टर का डिस्कशन किया है तो नीचे फूड शेल्टर का एनालिसिस और इवेंचुअली फूड शेल्टर के अंदर हाउ सक्सेसफुल दे विल बी।
ये कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है इसकी मार्किंग के अंदर, दैट यू हैव टू बी माइंडफुल, बिकॉज रिमेंबर evaluation is an extension of analysis. ठीक है, दैट राइट इज अ नेसेसरी थिंग। इवैल्यूएशन तुम बिल्कुल ही किसी और गुड की कर लो और एनालिसिस किसी और की कर लो, तो वी आर नॉट गिविंग यू मार्क फॉर इवैल्यूएशन। राइट ऑलराइट सर क्लियर ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर फॉर द डे, एंड